Wow, full toss makan puri ka. Ooh, damn.
Ma'am, we have to leave this class. Good evening, all. So, I hope you have seen the slides. Is it what you wanted? Yes. So, you can find all the topics that we covered in the last class along with some questions that I gave for assignment. Um, have you practiced all those? You have to actually create an assignment notebook and you keep on practicing those questions, and if in case you have more questions to practice, definitely you can go in for that, but please create a separate very thin notebook that will contain the questions like these which we discuss in the class, and then the assignments that I'll finally give at the end of the class, right? So who remembers what we did in the last class? What did we study? Just a quick recap. Ma'am, can you please share the link of the last class because it's my first class of CP. Yes, Vidya, ma'am, mine also. सुनो. I have shared you a classroom link. अभी आपको मिला यहाँ पे? In the Have you chat seen box? Yes, ma'am. Yes, chat box. In the chat box, have you seen that? Yes, ma'am, but it's only the Join the slides one. class. Yes, the slides are, see, it was number system and these are numericals. So you can definitely practice those numericals from there. The technique for conversion is given there. In case you have any difficulty, you can still ask me. Let us do Okay, ma'am. questions on that. Na? Yeah, right. If you still have any difficulty, you can definitely mail me up. I receive a lot of emails. Some students are practicing a lot on coding and numericals. They are asking you questions. So, in case you have any difficulty, you are free to ask. Even I'll give you 5 minutes just to go through these slides and tell me if you find any difficulty. Okay, ma'am. Yes. Okay, they are numericals. Should I share the link once more? भाई chat box में लिखा हुआ है. Still I am sharing that link again.
Please join the classroom with this link. "17 of you have joined already, and you can see these slides here. Today, whatever we are going to discuss, I'll post you the slides again in the classroom so that you don't miss anything. Even do you have like ICN? I'll post some books and references also, right? So that you can read those books in case you need to study this in detail, right? So here, Ma'am, I'm sharing the books also. Yes. ma'am, page number 8 to 9, I have doubt. Yes. 1 minute. So, what is your doubt? Ma'am, that we make it once. Yes. The decimal system. Yes, Page ma'am. number 8 is decimal system. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You can write only 10 unique elements in a decimal number system, which is 0 to 9. So, what happens if you're going to write 10? There is always a system that was taught when you were kid. So, unit place is reset and you have a carry over. And carry over goes to the next higher order of digit. Like if it is units place where the reset is to be done, the carryover goes to the tens place. If the carryover is in tens place, the 9 comes, which is the maximum limit which you can write, is in the tens place also, like 99. Ones place is 9, tens place is 9. So obviously the carryover will be generated and it will move to the third place and it becomes a 3-digit number. So whenever you reach the maximum writable digit in any number system, the next higher digit plus 1 will always be a 2-digit, 3-digit or a plus 1-digit number, right? ये बताना चाह रहे थे हम. So exactly this is what is written in slide number 8. Done? Yes, ma'am. और यही चीज पेज नंबर 9 में बाइनरी में है. बाइनरी में you can write only 0 and 1, right? Now when you want to write 2, so 0 and 1 are two unique elements which are already done. So whenever you want to write decimal number 2 in binary system, it will be units place will, because you have reached 1 in the units place, it has to reset, so it will reset, but the carryover will generate and it will become a 2-digit number. वैसे ही 10 will become 11 and now both the digits are the maximum digits. तो क्या बताया आपको, वंस प्लेस टेंस प्लेस वापस रीसेट हो गए, 0 बन गए और कैरी ओवर होने के कारण इट बिकम्स अ 3-digit नंबर. ओके, सो यू keep on increasing the digits as you reach the maximum capacity of writing it. Done? जैसे अब अगर आप निकालें पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 क्या कहता है? What is page number 11? Ma'am, I Chal- am looking the Hmm? base 4. बेस 4 सबके हाथ में स्लाइड्स है अब तो, क्लासरूम में अब अवेलेबल है. सो व्हेन यू राइट एनी नंबर सिस्टम इन बेस 4, चलो मैं भी खोल लेती हूँ सो दैट एवरीबडी इज सीइंग दैट. स्क्रीन शेयर. So this is base 4. So what's happening in base 4? How many digits you can write? 0, 1, 2 and 3. 3 is the maximum digit. What will happen once 3 is there and you want to write the next number in order? It will carry forward. It will, yes, it will create an overflow and it will become a 2-digit number. वैसे ही 10 11 12 13 लिख लिया. Now 13 is full. So what will happen? 3 will reset to 0 and a carry will be generated in the tens place and it will become 20. Maximum limit is 33. Now 33 is the maximum digit that you can write with a base 4 system.
Okay. Now base 4 system 3 3 highest reach plus 1 means 3 3 will reset to 0 0 and a carry forward will be generated and it will become a 3-digit number now. So this is how we write counting in any base. You wrote it in decimal, बचपन से लिखते आ रहे हैं, KG1 से मार खा खा के गिनती लिखी, टीचर ने कहा कि रिवर्स ऑर्डर लिखो तो रिवर्स लिखा, फॉरवर्ड लिखना है लिखा, 10 के जंप्स में लिखा, इवन ऑड लिखा, सब ऐसे ही कंसेप्ट यूज किए हैं. बस अब उसको मेक इट अ जनरल फॉर्मूला such that if you are given a question to write in any base system, you are able to write it. Okay, that is the same formula. फॉर एग्जाम्पल 103 आएगा तो 104 जब आएगा तो 110 हो जाएगा. Yes, 3 रीसेट हो जाएगा. जो जिस प्लेस में मैक्सिमम रीच कर लिया आपने वो रीसेट हो गया और उसके बाद वाले पे कैरी जनरेट कर दिया. 103 110 बन जाएगा. 3 रीसेट 1 कैरी जनरेटेड इन दी. मैम 103 तो लिखाएगा लेकिन 104 नहीं आएगा ना. नहीं आएगा ना, हम तो बोल रहे हैं डेसिमल 4. हमको गिनती किस में करने की आदत है? 1 2 3 0 1 2 3 4 कैसे लिखना है बेस 4 में? 1 0. यही चीज हमने पढ़ी डेसिमल में. हमें डेसिमल में कैसे लिखना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 का मतलब 1 और 0 होता है. एलिमेंट्री डिजिट्स जो होते हैं वो यही होते हैं. बाइनरी में भी 0 1 2 2 कैसे लिखते हैं? 2 हम डेसिमल में, हमको गिनती हमेशा डेसिमल में ही गिनोगे आप, पर उसको रिप्रेजेंट बाइनरी में कैसे करते हैं? इट इज 1 0 ऐसे बोलते हैं. लाइक यू स्टिल काउंट इन डेसिमल बट यू represent it in any number system and that representation you have to learn. Okay, तो आप 1 2 3 4 बोलोगे बेस 4 सिस्टम में, पर 4 लिखोगे नहीं. उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 0 से. ओके, 5 को 1 1 से, 6 को 1 2 से, 7 को 1 3 से, 8 को 2 0 से. ये बेस 4 है. ओके, ओके मैम. ये था इसका इंटेंट. ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 और सिर्फ 9 8. यस, जैसे 8 बोलोगे आप इट बिकम्स 1 0 बिकॉज यू कांट रिप्रेजेंट एनीथिंग आफ्टर 7. तो यहाँ पर जब भी हमें 8 लिखना है, डेसिमल नंबर दिमाग में सोचो 8, रिप्रेजेंटेशन इन ऑक्टल नंबर बिकम्स 1 0. जैसे 10 इन हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन इज 0 to 9 हेक्साडेसिमल में. हेक्सा सॉरी. हाँ, 10 कैसे लिखेंगे? ए. तो आप सोचते क्या हो? डेसिमल, और उसका रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल में. ओके, बचपन से सीखते आए ना, एक मन में रखो और एक लिखते जाओ. टीचर भी कहती थी, मम्मी भी कहती थी, सब ऐसे ही पढ़ाते थे. सो सेम टेक्निक, डोंट वरी. आवर ब्रेन हैज बीन ट्रेन्ड टू लर्न लाइक दिस. ओके, अब इंजीनियरिंग में भी सेम पढ़ाई, वैसे ही मम्मी जैसे और स्कूल के टीचर जैसे. सो वी फिनिश अप दिस वन and now we'll begin what we were supposed to study today, that is flowcharts. ठीक है, बाकी स्लाइड्स पढ़ लीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा. Yes. Somebody asked me something. हाँ हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, आप उसमें लिखा होगा. आप स्लाइड्स पढ़ोगे तो एट द एंड यू विल फाइंड आप देखो उसमें मैंने कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हैं और कहा है कि यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. कैन यू सी द लास्ट स्लाइड?
Yes, that you have to do as an assignment. Should we begin now? Yes. थोड़ा सा ये बच्चों जैसा होमवर्क है। चिंता नहीं करो, आप लोग सब बैठोगे तो you can finish it in 10 minutes, not more than that. Okay? अब ये पढ़ें कि और भी किसी को कुछ पूछना है? ट्यूटोरियल बैचेस जो है आपकी शफल हुई हैं एंड वी हैव रिसीव्ड एन ईमेल एंड नाउ आई हैव शेयर्ड द लिंक टू द ट्यूटोरियल बैचेस शेयर्ड विद अस. सो रोल नंबर 47 ऑनवर्ड्स सारे यहाँ पर होंगे. चलिए, तो फ्लो चार्ट्स, राइट? फ्लो चार्ट्स. Science teacher used to say in the class, since primary, always draw a diagram when you want to understand the concept. आप सब ने बनाया, photosynthesis बनाया, solar system बनाया. There is always a diagram. You can even write answers, lengthy answers. So, but when you represent something in diagrams or graphical representation that you create, makes it easy for anybody to understand. Suppose you are writing essay on 9 planets. Who is going to find out what planet have you written? Have you missed Uranus? Have you missed Earth in between? तो हम क्या करेंगे? If the diagram is ready, it is easy to understand that the student knows all the planets, and he will definitely label them to make sure that he understands कि all the planets revolves around the sun. तो एक डायग्राम से आप कितने सारे टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हो. सो ग्राफिक्स is an important part of any engineering study. You may be learning electrical, electronics, mechanical, everything. कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, आप खुद इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हो, तो everything when you draw it in design, a model or a representation makes anybody else who is not the creator of the system may understand कि ये बना क्या है. कोई भी लेमन भी उसको समझ सकता है कि हाँ आप करना क्या चाह रहे हो. सिमिलरली इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम जब कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं, देन ऑल्सो वी आस्क यू टू ड्रॉ डायग्राम्स विच आर फ्लो चार्ट्स. You are actually writing programs directly on the editor. We say that wait, whenever you have a problem, take the paper and pen, write steps 1, 2, 3, 4, 5. कितने स्टेप में सॉल्व कर सकते हो? सबसे कम कितने स्टेप्स लगेंगे? सबसे कम कितने वेरिएबल्स लगेंगे? You can write it in paper and pen, and that process is called as writing algorithm. And once you have drawn the algorithm, you can easily make out how the flow of data in the form of diagrams can be made. जो diagram जैसा यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ इसी तरह से बनेंगे, but basically they are representations. अब ये बनाना क्यों है? क्योंकि जब कोई बहुत complicated problem आएगा, so reading, nobody likes reading text. So what will happen? In fact, in the program, everybody names the variable on his own. प्रोग्राम का नाम भी आप अपनी मर्जी का दोगे, दादा दादी गाना गानी कुछ भी. But when somebody reads it, he will understand दादा means कि इसको क्या सिग्निफाई करके आपने प्रोग्राम का नाम दिया है. आपकी ABC तो कुछ भी हो सकते हैं, but when you define that this is how the ABC is going to flow in the program, you will make the person understand कि हाँ इसका मतलब क्या है. तो फ्लो चार्ट बनाना कहीं ना कहीं पर एक सिंप्लीफिकेशन है सोल्यूशन बनाने का. तो ये देखिए, ये 3 रिप्रेजेंटेशन है. फर्स्ट इज द एल्गोरिथम. आई सेड यू शुड राइट दी स्टेप्स, सो वी हैव रिटन दी स्टेप्स. यू बिगिन समवेयर. सपोज दिस इज द सिंपल प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स. इसमें भी हमने ABC ही लिया है, पर यहाँ पर ये समझ में आ रहा है डायग्राम में. अब आप प्रोग्राम पढ़ते इंट ABC, फिर नीचे पूरा पढ़ते, ये तो छोटा सा प्रोग्राम है. बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग लेंथी प्रोग्राम्स? इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेस what the program is and how the data is flowing in the program. So we made a flow chart, and before making a flow chart, you can see these are 3 steps, and my problem is solving these 3 steps only. So you made these 3 steps
and you wrote start and stop to signify that here is the algorithm, here the algorithm begins, and here is the place where the algorithm ends. And you can directly relate it. In the flowchart, you will see symbols start and end. In the program, you see open curly bracket and closing curly bracket of the main function, because everything inside the main is going to run. So what have you done? You have open and close curly bracket to define the block that runs. So this is how you actually represent a program in 3 different formats: algorithm, flowchart, and program. Because you're learning C language, it is applying the syntax of C language in each of the steps of the flowchart. If you're writing program in Java, what will you do? You'll pick up the flowchart or the algorithm that is ready for you, and you'll keep on writing it in the syntax of Java. You do it in any programming language. So basically, writing an algorithm or a flowchart gives you the flexibility to write the program in any programming language that you have learned or you are going to work on. So it is a neutral thing. Program जो है स्पेसिफिक होता है लैंग्वेज के लिए. Algorithm और flowchart एक generic solution है. So you can apply it in any programming language. वो तो था सीधा सीधा. You have to read, you do something, and you come out and you say print. Here you see that we have to decide something. Say it the lamp was not working. So now you have to check for some condition. Whenever you want to check for some condition, there is a diamond box, and inside the diamond you have to write what condition do you want to check. The first condition in this particular slide says where to check whether the lamp is plugged in or not. So there is 2 answer that you can see. Either it's plugged in, yes, or either it is not plugged in, means no. So you can say that if it is plugged in, yes, it means there is some problem with the bulb. So आपने दूसरे स्टेप में क्या किया? बल्ब को चेक कर लिया. अगर प्लग इन नहीं होता, that means the lamp was not plugged in. So what will you do? You'll plug in the lamp and you'll check whether it is working or not. तो अब लैम्प तो प्लग्ड इन है, बट स्टिल इट इज नॉट वर्किंग. इट मीन्स द बल्ब हैज टू बी चेक्ड. तो इसलिए दूसरी कंडीशन है बल्ब बर्नड आउट एंड इट्स रिटन इनसाइड द diamond. And then also you have 2 options: either it is burned out, yes, obviously replace the bulb. If it is not, then definitely there is something wrong with the lamp and you have to buy the whole lamp once again. So this is how you write conditions, and you see how the flow is going. Either there is an option of yes or it is no, yani true ya false, and you have to decide what happens when it is true and what happens when it is false. So this is how you're going to write algorithm. These are the basic flowchart symbols that you have to write. Terminal, start and end. Remember, start and end. Start and end are terminals. So इसीलिए यहाँ पर terminal लिखा है. Input output. Whenever you want to read something or you want to display something on the screen, that is called as input output. When you want to calculate something, processing. When you have to decide something, some condition has to be checked. Decision. There is a flow. So from where do the flow comes and where does it go? Arrowhead के साथ में arrows बना दीजिए, that becomes flow lines. And then there are connectors. Connectors say that when the page is full and the diagram has to continue to the next page, तो आप क्या करते हैं? एक end connector बनाते हैं और दूसरे पेज में एक start connector बनाते हैं. That means that the rest of the diagram from the first page continues to the next page and it is referred with the connector. जैसे आप लिखते हो, जब आप बड़ा आंसर लिख रहे हो तो आप PTO लिखते हो, प्लीज टर्न ओवर. The rest of the answer is in next page. या आपका आंसर कॉपी में पेज खत्म हो जाता है, so you refer पेज नंबर 1 में next है. So that is the language in text. Here in the diagram you draw connectors to connect 2 distinct parts of a diagram. Okay, done. तो ये है symbols. अब इन सिंबल्स को ध्यान रख लीजिए बिकॉज आपको आगे के फ्लोचार्ट्स इन्हीं सिंबल को ध्यान में रख कर बनाने हैं.
टेकिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा, सब लिखना है. सो द प्रॉब्लम टू add first 50 odd numbers and display the sum. So what have you done? You have taken two variables, n 1 से शुरू किया, plus 2 करते जाना है, and when you do plus 2 it means you are taking the odd number, jumping in odd numbers 1 3 5 7, और उसी के लिए आपने sum is equal to sum plus n कर दिया है. तो sum plus n जब जितनी बार आप करते जाएंगे, यू कैन सी दी फ्लो चार्ट. अब क्लियर है वॉइस? मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा धीरे आ रही है और बीच में कट भी रही है. I mean, mine is clear. अब आई? Are you able to hear now? Yes, ma'am. Yes. So I wanted to tell you that this is the algorithm and the flowchart to calculate the first 50 odd numbers. So calculating the odd numbers and then taking the sum every time. And you see it's within a loop. Sum is equal to sum plus n. Condition check करिए. Have you reached 99? Because the last odd number that you will receive is 99. So 99 तक की गिनती गिननी है और हर बार काउंटिंग करना है. n is equal to n plus 2 so that you handle all the odd numbers, right? If it was the sum of first 50 even numbers, then क्या चेंज होता है यहाँ पे? n plus 1 या only N equal to 0. n plus n 1 equal to 0. बेटे आप करके देखो, 1 2 plus 1 तो 3 होता है, 3 plus 1 4 होता है. ऑड नंबर के लिए 1 plus 2 किया तो 1 plus 2 क्या बन गया? 3. 3 plus 2 क्या बना? +2 प्लस 2 तो करना ही है. And we will add कहाँ plus पे 1. चेंज आएगा? twice of n plus 2. Plus 1 होगा. ट्वाइस ऑफ एट प्लस 2 क्या होता है? मतलब इतना भी कॉम्प्लिकेट मत करिए गणित को. गणित तो सिंपल ही होती है. मैथ्स इज ऑलवेज इजी, राइट? पहला नंबर क्या है? उनका सम ही इवन आएगा. हम्म उनका सम ऑड आएगा. यहाँ पे ये सेम प्रोग्राम अगर मुझे इवन नंबर के लिए बनाना हो तो क्या करना? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. इस part में Ma'am, your voice is crackling. 6 7 to class with it. Ma'am, your voice is cracking. Yes, give me a second. Now is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am. Shallow. So back to our problem. The problem is that this is the flow chart to calculate the sum of odd numbers. What should change so that this same algorithm calculates the sum of first 50 even numbers? Ma'am, n is equals to 0 instead of 1. तो वो 0 से काउंट करेगा. 0 इज 0 प्लस 2 और इस तरह से फर्स्ट 50 पे पहुंचेंगे तो कहाँ तक पहुंच पाएंगे आप?
If you count from 0, 98. मैं फिर 98 पे रुक we जाएगा। will reach to 9. तो इसीलिए शुरू कहाँ से करें? 2 से 2 से तो बिल्कुल 2 से सिंपल, जैसे प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा था, बिल्कुल उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. The computer can do only simple arithmetic, plus, minus, multiplication, division, and multiplication also it does in terms of addition. जैसे 5 times 6 करना है तो वो 5 को 6 बार ऐड करेगा. So it means everything when broken down into the language of simple mathematics is fast, quick and easy to understand, right? तो ऐसे ही करना है. अब अगर इसी सेम प्रॉब्लम को फिबोनाची सीरीज जनरेट करके और फिबोनाची सीरीज का अप टिल 99 जनरेट करना हो तो क्या करना चाहिए? 100 के अंदर के सारे एलिमेंट्स इन द फिबोनाची सीरीज, उनका सम निकालना है. So now we did it for odd. You can see here. You told me that how to do it for even. Now calculate a Fibonacci series and keep on calculating its sum. क्या होगा? What is Fibonacci series? Anyone? Remember Fibonacci series? last two numbers adding the third number. You actually generate the next term by adding the previous two terms. Right? ऐसे ही है ना? जैसे शुरू कहाँ से करें? 1 1 2 3 फिर क्या आएगा? 5 फिर 8. 8 आएगा. चलो, तो अब यहाँ तक का फॉर्मूला अगर हमें बनाना आ जाए तो ये तो कहीं तक भी बन जाएगा. तो क्या करना चाहिए? हम शुरू, जैसे यहाँ पर आपने देखा n इज इक्वल टू 1 से शुरू किया. यहाँ पर हम क्या करें? हमें शुरुआत के 2 एलिमेंट्स देने पड़ेंगे, तब आगे की सीरीज बनेगी, क्योंकि आपने कहा तीसरा नंबर सम ऑफ प्रीवियस 2 से ही बन सकता है. राइट? ऐसे ही कहा था ना सबने. तो जैसा हम बोल रहे हैं उसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? A सबके equals पास to 1. पेपर पेन है? हाँ, a इज इक्वल टू 1 फिर और b इज इक्वल टू 1. पहले 2 एलिमेंट्स दे दिए, 1 1 2 3 5 8. ये सीरीज है. सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 2 आ गया. माने 1 1 और 2 तो पता चल गया कि a प्लस b करने से तीसरा आ जाएगा. अब a और b को क्या बनाए कि चौथा एलिमेंट जनरेट हो जाए? व्हाट शुड वी डू? C. The first element is 1. Agreed? Yes, ma'am. The second digit is also 1. Yes. Agreed? Yes, ma'am. Third digit is 1 plus 1. 2. Agreed? तो हम इसको बोल देते हैं A, B और C, या सम. यहाँ पर सम यूज हो रहा है ना, हम सम ही यूज करते हैं. तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है और सम इज इक्वल टू, या a और b ही मान लेते हैं. चलिए, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, या i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1. नाउ वी हैव सम विच इज i प्लस j. ठीक है, तो थर्ड हो गया. अब चौथा टर्म कैसे बनेगा? b और सम को ऐड करने से. राइट? और फॉर्मूला तो आपने a प्लस बी का बना के रखा है, तो अपन क्या करते हैं? b को दे देते हैं c की वैल्यू. ऐसे करें, 1 1 2 3 है. राइट? अभी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 है और सम इज इक्वल टू 2 है. अब a बन जाएगा 1, b बन जाएगा 2, तभी तो सम कैलकुलेट होगा 3. सिंपल असाइनमेंट, चेंज ऑफ द वेरिएबल्स, कुछ ऐसे. क्या किया हमने यहाँ पे?
पहले दो एलिमेंट्स डिक्लेयर कर दिए, सम इज इक्वल टू आई प्लस जे लिया, हर बार आई और जे को बदलते जाना है। आई क्या बनेगा? सेकेंड टर्म यानी कि जे, और जे क्या बन जाएगा? जो वैल्यू एस की कैलकुलेट की। अब हर बार आई प्लस जे और ये तीन टर्म्स को लूप में डाल दीजिए, सम ऑफ सीरीज बन जाएगी। Yes, ma'am. अब आपने इसी तरह से बिल्कुल सिंपल टेक्निक से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यू वांट टू calculate the grade whether the student has passed or failed, and the strategy is अगर grade 50 से कम है तो he has failed, if the grade is more than 50 he has passed। तो कंडीशन ग्रेड लेस देन 50, ग्रेड लेस देन 50 चेक कर रहे हैं, भाई ग्रेड कम है 50 से, यस तो फेल, एल्स पास। ग्रेड निकालने के टेक्निक क्या है? इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द मार्क्स obtained in 4 subjects। So this is how you write the flow chart. Understood? In the same way, you have seen generating Fibonacci series, जिसका solution तो हमने दे ही दिया है। Suppose आपको ये number दिया 256, can you write the reverse of the digits? यानी कि 652 लिखा हुआ है, कैसे करेंगे? -1 कर दे, उसको लूप में डाल दे। किसको -1 कर दिया? 256 -1 और उसमें रिवर्स 255 हो गया। I am saying reverse of the digit 6, 5 and 2। ओके मैम। ये कैसे करेंगे? How will we मैम do? ए बी सी मान लेंगे तीनों डिजिट को और ए इक्वल टू सी कर देंगे तो पता कैसे चलेगा a equal to 2 है? यहाँ तो दिख रहा है, when you can visually see it, the computer where you write a program, the program cannot see anything. You have to tell that the units place is 6, tens place is 5 and hundredth place is 2. How do you do that? We restrict the question to taking only 3 digit numbers. तो कैसे करेंगे? How will you extract 2, 5 and 6 separately? सोचो, आपको सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही आता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सिखाया है। द फर्स्ट क्लास वाज दैट ओनली, सिंपल अरिथमेटिक, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। डिवीजन में दो चीज़ें सिखाई, एक होता है पूरा डिवाइड करने के बाद में जो सोल्यूशन आए वो लिखें, और दूसरा हमने सिखाया था आपको रिमाइंडर लिखना मॉड ऑपरेटर से, मॉड्यूलो। सो can you use these operators to tell me how you will extract 2, 5, 6? Anyone? Please answer. The assessment is entirely based on the active participation in the class. Anyone? कैसे निकालेंगे 2 अलग, 5 अलग और 6 अलग? ए, बी और सी, इन्होंने कहा 2, 5, 6, पर ए को कैलकुलेट कैसे करेंगे? अच्छा, I said the question is restricted to 3 digit number. What is the answer if you divide 256 by 100? What is the quotient? 2, 2. And remainder? 56. 56. Now divide 56 again with 10. What is the remainder? 6. And quotient? 5. निकल गए 2, 5 और 6 अलग अलग।
और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है और मॉड्यूलो भी यूज करना आता है ताकि आप रिमाइंडर कहीं रख लें। बस एक उसको रिकर्सिवली करते जाना है, पहले 100 से फिर 10 से। इसी तरह से अगर 4 डिजिट नंबर होता या 5 डिजिट नंबर होता तो 1000 से, फिर 10,000 से, इस तरह से आप इसको डिवाइड करते जाते हैं। बस आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी डिजिट्स हैव यू एंटर्ड। सो ये थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें, 3 डिजिट नंबर में तो इट्स वेरी इजी, 100 और 10 2 डिवीजन लगेंगे, दोनों बार में रिमाइंडर और क्वोशिएंट अलग अलग निकालने हैं। 2 5 और 6 अलग हो गए। अंडरस्टूड? It is simple. Don't think that programs are going to be very complicated thing. It is simple as a primary school mathematics. और आपको उसी लेवल पे सोचना है। जब आप किसी चीज को सिंपल सोचते हो तो आप बेहतरीन सोल्यूशन निकाल पाते हो। When you think at a level of complexity that it is a very complicated theory, आपको कभी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन वैसा ही सिंपल होता है जैसा बचपन में सिखाया गया होता है। एलिमेंट्री स्कूल के मैथमेटिक्स ही होती है जो जिंदगी भर काम आनी होती है। सो ट्राई टू पुट योर थिंकिंग कैप ऑन दैट। से इट, चलो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इफ देयर आर 2 नंबर्स ए एंड बी, राइट, हमने यहाँ पर पहले जितने प्रोग्राम किए ए प्लस बी, ए माइनस बी, सबने किए। नाउ इफ देयर आर 2 नंबर्स ए एंड बी एंड यू ओनली नो हाउ टू प्लस, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू डिवाइड एंड हाउ टू मल्टीप्लाई, आपको सिर्फ 4 ही चीजें आती हैं। आप KG2 के बच्चे हो, आप मुझे बस, आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। सो अब बताइए कि ए बड़ा है या बी, ये कैसे पता चलेगा? हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर ए और बी, विच नंबर इज बिगर नंबर? मैम ए बी को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर आंसर इज नेगेटिव, तो इफ वी सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी एंड आंसर इज नेगेटिव, दैट मींस बी इज बिगर, एंड इफ वी डू द रिवर्स एंड द आंसर इज नेगेटिव, दैट मींस द अदर नंबर विल बी बिगर। सिंपल। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए होती है लॉजिक क्रिएट करने में। एलिमेंट्री लॉजिक, द programs can be made by anyone. There is no limit. Programming means mathematics, and you all have the background of mathematics. The only thing here is you have to fit a thinking cap on your head, right? I gave an example. Earlier we used to get checks, and in the check, if the amount was 256, it was extracted as 2, 5 and 6, and 205 in the tens place becomes 50 and 6 is written. So this is how the digits were extracted to get it printed on the check, right? तो ये सिंपल algorithm है, ये आप भी सोच सकते हो कैसे बनेगा, and this is how we have to write programs. Okay, so now if we have to discuss these, ये कैसे करेंगे? ये प्रॉब्लम्स नंबर का आपको सॉल्व मतलब करने हैं। प्राइम नंबर का वो सेल्फ से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो सकता है, इसलिए अगर हुआ तो प्राइम और नहीं हुआ तो कंपोज। तो चेक कैसे करेंगे डिविजिबिलिटी? If we divide, if let's say the number is a, and if we divide a by itself, हाँ, the every number answer will say yes. 8 is also divisible by 8 and 1, so it will say yes, but it is not a prime number, right? सोचो, आप जो कह रहे हो वो एक पॉइंट पे सही है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि वो और किसी से डिवाइड ना हो। तो आपको ये चेक नहीं करना है कि वो अपने नंबर से और 1 से डिवाइड हो जाए, आपको ये चेक करना है कि किसी दूसरे नंबर से जो कि उससे छोटा है, उससे डिविजिबल नहीं है। और इनफैक्ट पूरे अगर 8 बोलो तो 9 तक चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उसके आधे तक भी जाकर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्राइम है कि नहीं, राइट? पता चलेगा कि नहीं चलेगा? यस मैम। अगर आपको 14 चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं, तो आप 1 से 13 तक डिविजिबिलिटी नहीं चेक करेंगे, आप कहाँ तक चेक करेंगे? 7 तक।
बस। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है कि अब आप कैसे प्रोग्राम्स बनाएंगे। इसमें से 2 तो कर दिया है हमने। अब जो सेम प्रॉब्लम था 2, 5, 6, अगर इन डिजिट्स को ऐड भी करना है तो जैसे ही किसी ने सजेस्ट किया था a is equal to 2, b is equal to 5, c is equal to 6. Now you can add the digits of a given number also. But what is the problem? Extracting a, b and c from a given number. And if you are able to do that, you can do anything. How do you swap two numbers? If a is equal to 5, b is equal to 9, make a 9 and b 5. कैसे करेंगे ये स्वैपिंग? ऐसे ही सोचो। सोचने में ना तो मोदी जी टैक्स लेने वाले हैं और ना मैं आपको कुछ बोलने वाले। आप जितना चाहे सोच सकते हैं। कैसे करेंगे जल्दी बताओ। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। +4 -4 नहीं बेटा, और सोचो। अभी तो फिर 4 निकालना पड़ेगा। 4 ही क्यों, एक सिंपल तरीका बना लेते हैं ना। एक कोई टेम्पररी वेरिएबल t ले लेते हैं, a को t में डाल दो, b के वैल्यू a को दे दो और b में वैल्यू t की ले लो, खत्म। सिंपल, ना प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लिकेशन। तो मैथमेटिक्स करना ही नहीं है ना जब सिंपल लॉजिक से काम हो सकता है। तो अब अगर हमने इस क्वेश्चन में लिख के दिया है आपको विदाउट यूजिंग अ टेम्पररी नंबर, देन यू कैन से कि अब प्लस माइनस करके अब कैसे लोगे। पर याद रखना, जैसे ही आपने प्लस किया तो वो नंबर की वैल्यू बदल जाएगी। तो दूसरे को कैसे रिटेन करोगे, क्योंकि आपको तो स्वैप करना है। तो अगर ये टेक्निक आ गई और आपको कहा जाए विदाउट यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल, देन यू apply mathematics. But when I am not restricting you, it's simple. पासिंग द पार्सल खेलना ज़्यादा अच्छा है बजाय प्लस माइनस करके कैलकुलेटर उठाने से। At times you have to think logically, right? So we end up our lecture here. ये स्लाइड्स भी मैं आपके डाल दे रही हूँ आपकी क्लासरूम में। प्लीज चेक इट एंड ट्राई सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग फ्लो चार्ट्स फॉर देम। ओके? एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम वो क्लासरूम का लिंक एक बार आप रोल नंबर 35 को सेंड कर दोगे क्या प्लीज? मुझे वो मिल नहीं रहा था। बेटा चैट बॉक्स में 2 बार ही डाला मैम, अच्छा मैम और ये अभी फिर से देखते हैं तीसरी तो। बार डाला। अभी फिर से ओके डाला। मैम, अब ये देखा? हाँ मैम ये तो दिख गया।